बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फेडरल बोर्ड क्लास 9 का इंग्लिश का पेपर। तो हम देखते हैं कि इसका पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम किस तरह से है। 75 मार्क्स का टोटल ये पेपर है, ठीक है। और इसके 3 सेक्शन हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। हम तीनों सेक्शंस को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यू है। ये आपका जो सेक्शन होगा ये 20 मिनट्स का होगा और 20 मिनट्स के अंदर आपके पास ग्रामर के टॉपिक्स होंगे, लिटरेरी टर्म्स होंगे। इसकी मैं डिफरेंस वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो अब जिस तरह से लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने लिए थे उसको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी है और प्रॉब्लम्स आई हैं उनको, तो हम उनको इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स जो हैं वो और एनहेंस हों, डेवलप हों और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपको मिल सकें। 15 मार्क्स के आपका सेक्शन ए होगा एमसीक्यूज के अंदर, 20 मिनट्स के अंदर आपने ये करना होगा। सेकंड है आपके पास सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी और सेक्शन सी मिलके बनते हैं 60 मार्क्स और इसका टाइम होगा आपके पास 2 घंटे 40 मिनट। 2 आवर्स 40 मिनट्स और 20 मिनट्स दोनों मिला के बनेंगे आपके 3 घंटे। टोटल 3 घंटे का पेपर होगा 75 मार्क्स का। सेक्शन बी को देख लेते हैं। सेक्शन बी के अंदर आएगी कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन आपके पास जो आएगी वो 250 से 300 वर्ड, 250 टू 300 वर्ड्स की कॉम्प्रीहेंशन होगी जो आपने गो थ्रू करनी है। उसके डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। उन क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहले आपके पास आएगी समरी राइटिंग। समरी जो आपके पास पैराग्राफ की आपके पास आ जाएगी, वो हम फर्दर डिटेल के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करेंगे। 6 मार्क्स की होगी और जो दूसरे क्वेश्चंस होंगे उसके आपके पास अगर 4 क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क्स के हैं, तो ये टोटल बन जाएंगे आपके 12 मार्क्स। 12 मार्क्स और 6 मार्क्स मिलके आपके कॉम्प्रीहेंशन में टोटल बन जाएंगे आपके 18 मार्क्स। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपके पास पोइट्री का सेक्शन आएगा। पोइट्री और पैराफ्रेजिंग, डैफोडिल्स है, डिफरेंट पोइंट्स हैं आपके पास, उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। ये होगी टोटल 9 मार्क्स की। 9 मार्क्स के अंदर आपके पास आ जाएगी पैराफ्रेजिंग। ये पैराफ्रेजिंग होगी 3 मार्क्स की और 6 मार्क्स के आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। क्या हो सकते हैं वो होंगे आपके पास वोकैबुलरी आ जाएगी, सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा, थीम आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी, सेंट्रल आइडिया, फिगर ऑफ स्पीच, इसके अंदर कौन कौन सी यूज होती है, सिमिली, मेटाफर और कौन कौन सी यूज होते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन, उनको डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या होते हैं और उनकी बेस के ऊपर आपके जो 9 मार्क्स हैं वो इजीली आप गेन कर सकते हैं। फिर आपके पास जो ग्रामर का नेक्स्ट पोर्शन आएगा, मेन इंपॉर्टेंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, फ्रेजल वर्ब्स हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, पंक्चुएशन है, इनके टोटल बनेंगे 13 मार्क्स। 13 मार्क्स की डिवीजन देख लेते हैं। 13 मार्क्स की डिवीजन में एक्टिव और पैसिव वॉइसेस 5 मार्क्स की। इसकी मैंने वीडियोस अपलोड की हुई हैं फर्दर डिटेल के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम और डिस्कस करेंगे। 5 मार्क्स की आपके पास आ जाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस। फिर आपके पास आ जाएंगे फॉर्म ऑफ वर्ब्स, फ्रेजेस, टेंसेस के टाइप के क्वेश्चंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लॉट ऑफ थिंग्स वी विल डिस्कस और उसके बनेंगे आपके पास 5 मार्क्स। 5 मार्क्स ये हो गए, 5 मार्क्स ये हो गए, 10 मार्क्स हैं। उसके बाद पंक्चुएट अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ होगा जिसमें आपने पंक्चुएशन की मिस्टेक्स निकालनी होंगी। 6 मिस्टेक्स आपने निकालनी होंगी और वो होगा टोटल 3 मार्क्स का। ये 3 मार्क्स और ये 5 मार्क्स और ये 5 मार्क्स ये मिलके बनेंगे 13 मार्क्स का टोटल पोर्शन, ठीक है, ग्रामर का। फिर आपके पास आती है ईमेल राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग। इनमें से कोई एक आपने करनी है, वो 8 मार्क्स की है। उस 8 मार्क्स में क्या होगा कि आपके पास जो फॉर्मेट है, आपने टू लिखना है, फ्रॉम लिखना है, डेट लिखनी है, वो सारा स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडी है, उसमें 3 मार्क्स आपके पास होंगे इसके फॉर्मेट के। आपने प्रॉपर फॉर्मेट लिखा है तो सर्टेनली यू विल गेट 3 मार्क्स। लेकिन 3 मार्क्स ऐसे नहीं मिल जाएंगे कि अगर आपने बॉडी में उससे रेलेवेंट चीज़ नहीं लिखी, रेलेवेंट चीज़ लिखी हुई होगी तो फिर आपको पर्टिकुलरली उसके फॉर्मेट के 3 मार्क्स मिल जाएंगे। बॉडी के उसके अंदर आपके पास आपने प्रॉपर सीक्वेंस के साथ लिखा हुआ है, प्रॉपर तरतीब के साथ, पैराग्राफ के अंदर कोई मिस्टेक्स नहीं है, वो आपके पास टोटल उसके 5 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका ईमेल एप्लीकेशन जो है, ये बन जाएगी आपके पास 8 मार्क्स की। फिर आपको एक लिखना होता है पैराग्राफ। 6 मार्क्स का पैराग्राफ होता है, 80 to 100 वर्ड्स का, ठीक है। इजी होता है, अंडरस्टैंडिंग आपके पास, आपके इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस है, इजीली आपने किया हुआ है, तो नो मैटर कि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो अटेन कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास इंग्लिश के पेपर में होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपने करनी होती है जनरली इंग्लिश टू उर्दू। ये आपने ट्रांसलेशन करनी होती है। उसमें आपने देखना होता है कि हमने वर्ड सही यूज़ किए हैं जो उन्होंने बताया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। उर्दू के प्रॉपर वर्डिंग देखनी होती है, या फिर आपके पास एक चॉइस होती है डायलॉग राइटिंग।
वो डायलॉग राइटिंग के अंदर 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन आपकी होने चाहिए। यानी कि अगर मैं किसी के साथ टेलीफोन के ऊपर बात कर रहा हूँ या किसी फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर एक मैंने बात शुरू की अपने फ्रेंड से और उसने उसका जवाब दिया, तो हम दोनों के जो एक सेंटेंस मिनिमम 8 सेट ऑफ कन्वर्सेशन होने चाहिए। 10 भी हो सकती हैं, तो आपकी 8 मिनिमम सेट ऑफ कन्वर्सेशन होंगी, तो उसको वो डायलॉग के प्रॉपर आपके 6 मार्क्स के लिए विदाउट मिस्टेक आपको मिल सकते हैं। या आपकी जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश टू उर्दू वो बहुत अच्छी है, आपको परफेक्टली पता है उसके बारे में, आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की हुई है और उन्हीं में से एक पैराग्राफ आ गया, तो सर्टेनली यू विल गो फॉर इट। और या फिर बहुत इजी पैराग्राफ है तो भी आप इसको आराम से कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन इजीली गेट। हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करके देखेंगे कि इसमें किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। और आई होप कि आपको ये पेपर पैटर्न जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि किस तरह से इसकी मार्किंग स्कीम होगी, किस किस का कितना टाइम होगा और आपने किस तरह से किस चीज़ को सॉल्व करना है। एंड आई होप कि ये डिटेल आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी, ताकि आपको जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको समझने में प्रॉब्लम आती है, 8 से आए 9th में किस तरह से मार्किंग होगी, इस चीज़ को समझ लेंगे तो आई थिंक कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर फर्दर वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह ताला इंडिविजुअली एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Bismillahirrahmanirrahim. Students, today I am going to share with you the English paper of Federal Board Class 9. So now let's see what are the important things for your learning regarding English paper grade 9. It consists of 75 marks. There are 3 sections, section A, section B and section C. Now let's see about the section A. In section A there are MCQs, multiple choice questions. It contains 15 marks. There are grammar concept, literary terms, and you have 20 minutes to complete this part of A part or section A, having MCQs. The second portion having B and C sections, it consists of 60 marks total. So 60 and 15, it becomes 75 marks. And these 60 marks have the time of 2 hours and 40 minutes. So 2 hours, 40 minutes and 20 minutes. It total contains 3 hours. Alright. So now let's see what is there in section B and section C. In section B we see first of all there is a comprehension. For so far as the comprehension is concerned, it is of 18 marks. This comprehension has 250 to 300 words detail. You have to go through it, you have to read the questions as well, and then you have to answer the question. First of all, there will be a summary of 6 marks. Summary you have to write. I will explain it to you in the next videos about the summary writing, about the MCQs, about the rest of the part of the English paper. But first of all, let's see the basics, that how the paper pattern is made. And there are other questions. Alright, 4 questions having 3 marks. So it will become 12 marks of other questions, 6 marks of summary. So it will become 12 plus 6, 18 marks in the comprehension section B. Second part is of poetry or paraphrasing. It consists of 9 marks. From the 9 marks, the paraphrasing has 3 marks and 6 marks for vocabulary, subject matter, theme, values, central ideas, figure of speech. So these kind of things we will discuss later on the other videos, that how you have to complete the poetry section as well. Number 3 are the phrasal verbs, form of verbs and punctuations. It consists of 13 marks. So then there are active and passive voices, just like we have already discussed, form of verbs, grammar concepts, all of the grammar concepts are there, from which active and passive voice contain 5 marks. And then form of verbs, phrases, etc., these contain 5 marks. And then punctuation, punctuate a paragraph. It has 6 mistakes and it consists of 3 marks. 6 mistakes will be there, you have to find out direct, and 0.5 marks of each mistake. So 5 marks and 5 marks and 3 marks, it will become 13 marks of this section of phrasal verbs and form of verbs and punctuation. Next there is number 4. This is from the section number C. We have discussed section A and section B. Now we are going to discuss section C.
In section C, there is email. How to write an email, and there is a pattern of application that we will discuss later on. Either email or application, it consists of 8 marks. Format of email writing or application, it consists of 3 marks, and the body of the email or application, it consists of 5 marks. Then there comes paragraph. Paragraph writing having 6 marks. You have to write 80 to 100 words. Different kind of paragraphs have been given, tolerance or nationalism, like any topic are there. So on which you have to write down one of the paragraph having 6 marks. And last part is of translation. You have to translate an English paragraph into just like Urdu, or there is an option that you can easily complete a dialogue. But remember that this dialogue should have at least 8 set of conversation, 8 to 10 set of conversation. Conversation mean just like if one person is talking and the other person is answering, so these both talking will make one conversation. So we will discuss these topics of dialogue and translation as well, and it will make 6 marks. Now first see 6 marks this here and 8 marks, and they become 14 marks. 14 and then 13. 14 and 6. 6 and 6, 12. 12 and 8, 20. 20 and 13, 33 marks. 33 marks and 9. It becomes 33 and 9, 42 marks. You see, 42 marks, 42 marks and 12 marks. It will have 54 marks. 54 and 6. 54 and 6, 60 marks. So this is total 60 marks from here and 15 marks from comprehension. So 50 and 15, 60 plus 15, it becomes 75 marks. Alright, so 75 marks of paper is there in your English section of Federal Board. So later on I will discuss with you all of the different sections, how you have to complete and different kind of exercises for your practice, so that it becomes so easy for you to complete the paper in time nicely and having the maximum marks. Thank you and have a nice day.